बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है 14.3 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है। फर्स्ट पैराग्राफ में से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो इस तरह आएगा, What is meant by source of EMF? Give their examples. इसका आंसर आप लिखेंगे, Our source of electromotive force EMF converts non-electrical energy, chemical, thermal, mechanical into electrical energy. Examples of sources of EMF are batteries, thermocouples and generators. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज द डेफिनेशन ऑफ EMF ऑफ अ सोर्स। ये स्टार्ट करेंगे आप। इट इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी से लेके थ्रू द बैटरी तक। इट इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इट फ्लोज थ्रू द क्लोज सर्किट। और द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म to the electrical form when 1 coulomb of positive charge passes through the battery. The formula of EMF is equal to energy over charge. E is equal to W over Q, where E is the EMF, W is the energy converted from non-electrical form to the electrical form, and Q is the positive charge. Next is the unit of EMF. The unit for EMF is joule per coulomb, which is equal to the 1 volt in SI system. Definition of the unit of EMF is, if the EMF of the battery is 2 volt, the total energy supplied by the battery is 2 joules. When 1 coulomb of charge flows through the closed circuit. यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन हाउ वी मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस और EMF. द आंसर इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट कंपोनेंट कैन बी measured by voltmeter connected directly across the terminal of the component. The positive terminal of the battery is connected to the positive terminal of the voltmeter, and the negative terminal of the battery is connected to the negative terminal of the voltmeter. Next one is the question, what is an ideal voltmeter? An ideal voltmeter should have very large value of resistance so that no current pass through it. Voltmeter is always connected in parallel with the device across which its potential difference is to be measured. साइड ब्लॉक में हमारे पास डेफिनेशन मौजूद है डिजिटल मल्टीमीटर की। What is a digital multimeter? A digital multimeter can be used to measure current, resistance and potential difference. Here the multimeter is in voltmeter mode to measure the potential difference across the battery. Next one, the measurement of EMF. ये भी आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। How we can measure the EMF? In general, EMF refers to the potential difference across the terminal of the battery when it is not driving current in the external circuit. So in order to measure EMF of the battery, we connect voltmeter directly with the terminals of the battery. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 14.4 ओहम्स लॉ। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में इस तरह पूछा जा सकता है, स्टेट ओहम्स लॉ, डिराइव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म्स, और एक्सप्लेन ओहम्स लॉ, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। इसका आंसर आप लिखेंगे, टेक अ नाइक्रोम वायर ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर से लेके रेजिस्टेंस के यूनिट ओहम की डेफिनेशन तक। एक्सप्लेनेशन में कंप्लीट एक्टिविटी लिखेंगे आप और
इसकी डायग्राम भी बनाएंगे। नेक्स्ट वन इज द स्टेटमेंट ऑफ ओहम्स लॉ। द अमाउंट ऑफ करंट passing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end, provided the temperature and the physical state of the conductor does not change. I proportional to V or V proportional to I. So the formula becomes V is equal to IR. R is the constant of proportionality and is the resistance of the conductor. SI unit is ohm, denoted by the symbol ohm. If a graph is plotted between the current I and the potential difference V, a straight line will be obtained. Next one is the definition of resistance. The property of a substance which offers opposition to the flow of current through it is called resistance. यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओहम। इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, ये कंप्लीट ब्लू ब्लॉक। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर एंड 1 एम्पेयर ऑफ करंट पासिस थ्रू इट, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी 1 ओहम। और ओहम्स लॉ की लिमिटेशंस है, temperature and the physical state of the conductor does not change. Next one is a side block, important for the short question. The question is, why ammeter is always connected in series? The answer is, in order to measure current through a resistance, ammeter is always connected in series with the resistance. Next one is the question, why voltmeter is always connected in parallel? Answer is, in order to measure potential difference across the resistance, voltmeter is always connected in parallel with the resistance. Next one is example 14.2. Reading on voltmeter connected across the heating element is 60 volt. Is 60 volt the amount of current passing through the heating element measured by an ammeter is 2 ampere. What is the resistance of the heating coil of the element? By using Ohm's law, V is equal to IR, we solve this example and the answer is 30 ohm. Next one topic is 14.5. VI characteristic of ohmic and non-ohmic. ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग और शॉर्ट में पूछा जा सकता है और ओहमिक और नॉन ओहमिक मटेरियल्स में डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। Ohm's law is valid only for a certain materials. First one is the definition of ohmic. Materials that obey Ohm's law and hence have a constant resistance over a wide range of voltages are called ohmic. Second one is the non-ohmic. Material having resistance that changes with voltage or current are non-ohmic. नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेनेशन है ohmic कंडक्टर्स की। ohmic conductors have a linear voltage current relationship over a large range of applied voltages. The straight line shows a constant ratio between the voltage and current. Ohm's law is obeyed. For example, most metals show ohmic behavior. Next paragraph में explanation है non-ohmic की। Non-ohmic materials have a non-linear voltage current relationship. For example, filament lamp and the thermistor. First one graph is for ohmic materials and second one is for non-ohmic materials. The resistance of filament rises, current decreases as it gets hotter, which is shown by the gradient getting steeper. Next one question is, why thermistor gets hot? The answer is, a thermistor
A heat sensitive resistor behaves in the opposite way. Its resistance decreases, current increases as it gets hotter. This is because on heating more free electrons become available for conduction of current. Next हमारे पास साइड ब्लॉक है. Question is, what is thermistor? A thermistor is a temperature dependent resistor and its resistance decreases as temperature rises. Thermistor is used in the circuit that senses temperature changes. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे और अगर इसका ग्राफ पूछा जाए तो ये ग्राफ आप ड्रा करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.